स्वागत है आपका एक नई वीडियो पे। सो आज 10th अक्टूबर है एंड इट्स समवेयर अराउंड 1:30. सो आई वाज सिटिंग पूल साइड, सो आई विल जस्ट गो बैक टू द रूम. मैं चेंज करूँगा एंड आई जस्ट गो टू द बीच विच इज़ जस्ट बिलो. इट्स इज़ लाइक 100 meters walking from where I'm sitting. So अभी बस बीच पे जाएंगे, थोड़ा do some activity, then come back to the pool, do some swimming and go back to my room. So आज दूसरा दिन है Ibiza में and it's just exploring the resort क्योंकि काफ़ी बड़ा है. There are some activities like rock climbing as well over here, so we'll do that as well. So आज का दिन, अभी मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चल रही थी, उतनी खास नहीं चल रही थी, तो मैंने दवाई कल ले ली थी. अभी मैंने लंच नहीं किया है, तो एक बार स्विमिंग एंड बीच में एक्टिविटी करके आने के बाद टेक अ शावर एंड देन विल हैव माई लंच. एडिटिंग चल रही है अभी एंड बस वीडियो अपलोड करके बीच साइड जाऊंगा मैं. The weather looks quite fine. काफ़ी पीसफुल है इधर. I'm enjoying my time over here. So guys, अभी 6 बज गए एंड स्विमिंग के बाद मैं अपने रूम के सामने देख रहा हूँ, तो ये व्यू है. It's on a cliff. हाँ, तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अमांते इबीजा. सो दिस डिनर स्पॉट विच इज़ इन अ क्लिफ. सो मैं 4 बजे स्विमिंग के लिए गया था. देन आई डिड फॉर 1.5 hours, देन हैड अ स्नैक टाइप ऑफ थिंग एंड फिर उसके बाद आई टुक अ शावर, रेडी होके then we drove down to this place. It was half an hour from where I am staying and abhi pahunch gaye. So this place has an amazing view, a proper sea view which you might have seen in this vlog, and I'll give you a glimpse of how this place looks like. Okay, that should be good enough now. So push the stop button. So guys, अभी 12 बज गए and it's October 11th and कल रात को डिनर के बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया. I was tired, so I woke up early today. So we came to a diving spot for scuba diving. I am not well, I am not doing. The other 2 people are doing with me. The other 2 people are doing actually. So it's already 12:20 and it would take around 2 p.m. to get done with this. So till then I'm just enjoying the view we have. You can see this, the view. And this is our second last day in Ibiza, so we're gonna go somewhere after this. And my health is not that good, so I am taking precaution as well. So that is why I did not go for diving today.
with the diving, now going back. So guys, अभी 8 बज गए एंड मैं एक्चुअली 2 बजे निकल गया था डॉक से. सो फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड ऑफ अ डाइविंग थिंग. वहाँ से हम एक रेस्टोरेंट गए फॉर लंच. सो आई हैड दाल मखनी एंड राइस. देन उसके बाद हम लोग होटल ही आ रहे थे. सो इन बिटवीन वी स्टॉप्ड अ फार्मेसी टू गेट अ कफ सिरप. तो मुझे थोड़ा कफ हो के रखा हुआ है. एंड फिर उसके बाद घर आ गए थे. आई रेस्टेड फॉर 1 or 2 hours. मैंने कफ सिरप ले लिया. अभी बेटर लग रहा है. आई एम जस्ट गोइंग टू द रेस्टोरेंट इन द होटल इटसेल्फ टू ग्रैब समथिंग टू ईट एंड गेट हॉट वाटर. तो भाई अभी मैंने गर्म पानी पी लिया एंड ऐसे थोड़ा सा वॉक वगैरह रिसोर्ट में किया. अभी जस्ट अभी होटल रूम में जा रहा हूँ. थोड़ा बेटर फील हो रहा है. अभी तबीयत थोड़ी बेटर लग रही है. आई होप कल तक आई एम टोटली फाइन. सो यू नो आई कैन एन्जॉय द ट्रैवल व्हिच आई एम डूइंग. सो ये व्लॉग पता नहीं कितना लंबा बना है या कितना छोटा बना है. तो इस व्लॉग के लिए मैंने इतना ही रखता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. अगर आपको पसंद आ रही है हमारी इबिजा की सीरीज़ तो कमेंट सेक्शन में बताना. एंड आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं urgent.bafna. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग.